शुभोदय बच्चों, आज हम सीखेंगे वचन बदलिए। वचन मीन्स सिंगुलर प्लूरल्स। यस नो चिल्ड्रन, वचन बदलिए। सिंगुलर मीन्स एक वचन, बहुवचन मीन्स plurals. In the before class we have learned about it. Yes no children, we have learned already about this topic. Now today we will learn some more words. Okay, आज हम कुछ और शब्द सीखेंगे, एक वचन और बहुवचन जानेंगे. ओके, राइट इन योर नोटबुक हेडिंग वचन बदलिए. राइट हेडिंग वचन बदलिए. वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. Okay, first write like this, वचन बदलिए, and in the next line write एक वचन and give some gap and then write बहुवचन. Okay, first one. Okay, first one बच्चा. बा चा दित्वाक्षर, चा आ मात्रा चा, बच्चा. What is this? This is चा दित्वाक्षर. How to write cha ditvakshar? Cha ditvakshar means half cha. Ditvakshar means half letter. Okay, this is cha ditvakshar. We will write cha like this. This is cha. When we remove the standing line, it becomes dvitvakshar. Okay, it becomes dvitvakshar. This is cha ditvakshar. See here. Okay, ba चा दित्वाक्षर, बच चा आ मात्रा चा, बच्चा. बा रीड लाइक दिस चिल्ड्रन, बा चा दित्वाक्षर, बच चा आ मात्रा चा, बच्चा. बच्चा मीन्स सिंगुलर. दिस इज सिंगुलर. बच्चा मीन्स बॉय, सिंगुलर फॉर्म. बच्चा. बच्चा का विलोम शब्द क्या है? बच्चा, बच्चे. बच्चा, ब चा दित्वाक्षर, बच cha, a matra che, bacche. In the before class we have learned that if here there is a matra, इस शब्द पर आ मात्रा लगा हो तो बहुवचन में क्या करना चाहिए? आ मात्रा हटाकर ए मात्रा लगाना चाहिए. यस नो चिल्ड्रन, एक वचन में आ मात्रा दिखाई देगा तो आखिरी में, इस शब्द के आखिरी में, इन द हियर if we see a matra in the last of the letter, then we have to remove the a matra and we have to add a matra. a matra हटाकर a matra लगानी चाहिए. Yes no children, we have discussed about this. Okay, now write second one. Second one गधा. How to write गधा? ग लिखकर धा आ मात्रा धा, गधा. गा लिखकर धा आ मात्रा धा. See here also a matra is there in the last of the word. Okay, here also a matra is there. Then what we have to do? We have to remove the a matra here and we have to join a matra in the bahuvachan. Gada. What we have to write? Gadha. Here in the bahuvachan गा लिखकर धा ए मात्रा धे. We have to add a मात्रा गधे. गधा, गधे. गधा, गधे. Third one बकरा. ब का रा, आ मात्रा रा, बकरा. बकरा is a singular form, एक वचन. बकरा एक वचन. Here what we have to write? Can you guess what we have to add here? Which matra we will add here? We have to remove the a matra and we have to add here a matra. Bakra. Here we have to write in the bahuvachan bakre. Bakra a matra re. Bakre. Bakra. Bakre. Bakra. Bakre. And the fourth one डिब्बा. डिब्बा. डिब्बा मीन्स ड लिखकर ड छोटी ई मात्रा डी, ड छोटी ई मात्रा डी, बाकु बादित्वाक्षर. This is Baditvaksha, half ba. If we remove
here standing line in the ba, then we get like this. This is ba Ditvakshar. If we remove this standing line, then we get like this. Okay? Dibba. Ba ko a matra. Dibba. Da choti e matra D. D को बा दित्वाक्षर. D बा दित्वाक्षर. Dib. बा आ मात्रा बा. डिब्बा. डा छोटी ई मात्रा D. D बा दित्वाक्षर. Dib. बा आ मात्रा बा. डिब्बा. डिब्बा. बहुवचन डिब्बे. डा छोटी ई मात्रा D. बा दित्वाक्षर ए मात्रा. डिब्बे. डा छोटी ई मात्रा D. बा दित्वाक्षर. डिब. बा ए मात्रा बे. डिब्बे. डा छोटी ई मात्रा D. बा दित्वाक्षर. डिब. बा ए मात्रा बे. डिब्बे. डिब्बा. डिब्बे. डिब्बा. डिब्बे. डिब्बे. डिब्बा means box. डिब्बा. डिब्बे. Okay? See again. बच्चा. बा चादित्वाक्षर. बच. चा आ मात्रा चा. बच्चा. बा चादित्वाक्षर. बच्चा ए मात्रा चे. बच्चे. ग धा आ मात्रा धा. गधा. ग धा ए मात्रा धे. गधे. ब का रा आ मात्रा रा. बकरा. ब क रा ए मात्रा रे. बकरे. डा छोटी ई मात्रा डी. बा. डिब. बा आ मात्रा बा. डिब्बा. डा छोटी ई मात्रा डी. बा दित्वाक्षर. डिब. बा आ मात्रा बा. डिब्बा. डा छोटी ई मात्रा डी. बा दित्वाक्षर. डिब. बा ए मात्रा बे. डिब्बे. डिब्बा. डिब्बे. Okay? If here in ekvachan a matra the last of the word, if you observe a matra, then without doubt you can remove this a matra and you can add a matra in bahuvachan. Okay children, write down in your notebook. Once take the screenshot. I will write some other words. And fifth one, पौधा. Fifth one, पौधा. पाऊ मात्रा पाऊ. धा आ मात्रा धा. पौधा. पाऊ मात्रा पाऊ. धा आ मात्रा धा. पौधा. Here observe. Did you observe here a matra? Then what we have to do here? We have to add a matra. Pau. De. Dha. A matra the. Remove here a matra and add here a matra. Paudha. Paudhe. Paudha. Paudhe. Sixth one. Pankha. Pankha means fan. Pagubindi pang. Kha a matra. Kha. Pankha. Pagubindi pang. Kha a matra. Kha. Pankha. Pankha bahuvachan. Pankhe. खा ए मात्रा खे. पागुबिंदी पंख. खा ए मात्रा खे. पंखे. पागुबिंदी पंख. खा ए मात्रा खे. पंखे. Seventh one, घोड़ा. घा ओ मात्रा घो. डा आ मात्रा डा. घोड़ा. घा ओ मात्रा घो. डा आ मात्रा डा. घोड़ा. Here also a matra. Then we have to add here a matra. घो डे. घा ओ मात्रा घो. डा ए मात्रा डे. घोड़े. घा ओ मात्रा घो. डा आ मात्रा डा. घोड़ा. घा ओ मात्रा घो. डा ए मात्रा डे. घोड़े. Eighth one, कमरा. का म रा आ मात्रा रा. कमरा. See here a matra. Here a matra and here also a matra. Kamara. Kamara means room. What is the opposite? What is the bahuvachan of this? Kamara. Kamara. Kamre. Ka ma ra e matra re. Kamre. Kamara. Kamre. Kamara. Kamre. Ka ma ra a matra ra. Kamara. Ka ma ra e matra re. Kamre. Okay children, once listen. Pa au matra pau. Dha a matra dha. Paudha. पा औ मात्रा पाऊ. धा ए मात्रा धे. पौधे. पागुबिंदी पंख. खा आ मात्रा खा. पंखा. पंखा बहुवचन पंखे. पागुबिंदी पंख. खा ए मात्रा खे. पंखे.
घा ओ मात्रा घो, डा आ मात्रा डा, घोड़ा. घा ओ मात्रा घो, डा ए मात्रा डे, घोड़े. Okay? काम, रा आ मात्रा रा, kamra, kama, ra ए मात्रा रे, kamre. Okay, children? If I ask paudhe, what is the ekvachan of paudhe? Then we have to write like this. Okay? Right? Paudha. Paudhe. If I ask a question, paudhe, what is the ekvachan? Then you have to write paudha. Pankha bahuvachan, pankhe. Ghode ekvachan. If I write here ghoda and keep here blank, then what you have to write? What is the ekvachan of ghode? Ghoda. Okay, children? Let's take the screenshot and note down. Okay? And ninth one. Children, listen here carefully what I am saying now. Ninth one is billi. See here. Ba choti e matra b, la ditwakshar, la badi e matra li, billi, la ditwakshar. This is half la, okay? La द्वित्वाक्षर. बा छोटी ई मात्रा बी, ला द्वित्वाक्षर बिल, ला बड़ी ई मात्रा ली, बिल्ली. See here, children, in the last we are getting here badi e matra. What we are getting here? Which matra? Badi e matra. Then what we have to write here in the bahuvachan? How we have to write bahuvachan? Billi, billiya. बा छोटी ई मात्रा बी, ला द्वित्वाक्षर, ला छोटी ई मात्रा ली, बिल्ली, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, बिल्लिया. See here, children, बा छोटी ई मात्रा बी, ला द्वित्वाक्षर बिल, ला बड़ी ई मात्रा ली, बिल्ली. What we have to write here? We have to remove the badi e matra and here it changed into choti e matra. This badi e matra changed as choti e matra, and we have to add lastly here ya a matra and chandra bindu. We have to add here extra a letter. What is that? Ya a matra ya ku chandra bindu ya. If we get here badi e matra, then this badi e matra will change into choti e matra, and extra we have to add ya a matra ya and chandra bindu. Yam, billi, yam, billi, billiya. Okay? We will see. And the what? Chinti. 10th one, chinti. How to write chinti? How we will write? Cha badi e matra chi, chi ku bindi. Chin means chi ku bindi, chin. Ta badi e matra ti, chinti. See here we can observe here this is badi e matra. Then what we have to do in the bahuvachan? What I have said now? This badi e matra changed as choti e matra. Cha badi e matra chi. Right here as it is. Just we have changing this one. Okay, last letter, just the last letter is getting changed. Okay, cha badi e matra chi, chi ku bindi, chin. This badi e matra changed as choti e matra. Ta choti e matra ti, chin ti, and extra one letter. What is that? Ya a matra ya ku chandra bindu ya, chin ti ya. Like this we will form bahuvachan here for badi e matra only. Chinti, chintiya, billi, billiya. Next, nadi. Now tell me how to write this nadi. Na, da badi e matra di, nadi. Then what we will change here? This badi e matra changed as choti e matra. Na, da choti e matra. Like this, okay? Na, da choti e matra di, and extra what is the letter here? Ya a matra ya ku chandra bindu. This one. This is common for every word. Okay? Nadiya, nadi, nadiya. Chinti, chintiya. Next, dibbi.
डा छोटी ई मात्रा डी, बा द्वित्वाक्षर बा, बड़ी ई मात्रा बी, डिब्बी, डिब्बी, डिबिया, यस, डा छोटी ई मात्रा डी, बा को बा द्वित्वाक्षर बा, छोटी ई मात्रा, दिस बड़ी ई मात्रा चेंज एज छोटी ई मात्रा, एंड या आ मात्रा, या को चंद्र बिंदु या, डिब्बिया, डिब्बी, डिब्बिया, डिब्बी, डिब्बिया, and 13th one makadi, 13th one makadi, ma ka da badi e matra d, here ma ka da badi e matra d, makadi, makadi बहुवचन मकड़िया, यस, ma ka da छोटी ई मात्रा, दिस बड़ी ई मात्रा चेंज एज छोटी ई मात्रा, एंड एड या आ मात्रा या, एंड चंद्र बिंदु, मकड़िया, मकड़ी, मकड़िया, मकड़ी, मकड़िया, एंड लास्ट वन 14th खिड़की, खिड़की, खा छोटी ई मात्रा की, ड का बड़ी ई मात्रा की, खिड़की, व्हाट इज द बहुवचन ऑफ खिड़की, व्हाट इज द बहुवचन, खिड़कियां, खा छोटी ई मात्रा की, ड की, ड का छोटी ई मात्रा की, एंड या आ मात्रा, या को चंद्र बिंदु, खिड़कियां, खिड़की, खिड़कियां, खिड़की, खिड़कियां, अगेन सी हियर चिल्ड्रन, बिल्ली, बिल्लिया, बिल्ली, बिल्लिया, बा छोटी ई मात्रा बी, ला द्वित्वाक्षर बिल, ला बड़ी ई मात्रा ली, बिल्ली, बिल्ली बहुवचन बिल्लिया, बा छोटी ई मात्रा बी, ला द्वित्वाक्षर बिल, ला छोटी ई मात्रा ली, बिल्ली, या को आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, बिल्लिया, चींटी, चा बड़ी ई मात्रा ची, ची को बिंदु चीन, टा बड़ी ई मात्रा टी, चींटी, चींटी बहुवचन चींटिया, चा बड़ी ई मात्रा ची, ची को बिंदु चीन, टा छोटी ई मात्रा टी, चींटी, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, चींटिया, नदी, नदी बहुवचन नदिया, ना दा छोटी ई मात्रा दी, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, नदिया, डिब्बी, डा छोटी ई मात्रा डी, बा द्वित्वाक्षर डिब, बा बड़ी ई मात्रा बी, डिब्बी, डिब्बिया, डा छोटी ई मात्रा डी, बा द्वित्वाक्षर डिब, बा छोटी ई मात्रा बी, डिब्बी, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, डिब्बिया, डिब्बी, डिब्बिया, एंड मकड़ी, मा का डा बड़ी ई मात्रा डी, मकड़ी, मा का डा छोटी ई मात्रा डी, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, मकड़िया, खिड़की, खा छोटी ई मात्रा की, ड का बड़ी ई मात्रा की, खिड़की, खा छोटी ई मात्रा की, ड का छोटी ई मात्रा की, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, खिड़कियां, खा छोटी मात्रा की, ड का छोटी मात्रा की, खिड़की, या आ मात्रा या को चंद्र बिंदु या, खिड़कियां. Okay children, what we can observe here, this badi e matra changed as choti e matra, and for every word extra we are adding ya, a matra and chandra bindu. For which words? Only for badi e matra. In the ekvachan, if we get badi e matra at the ending, then we change it as this. Okay children, for a matra we will write as, we will change आ मात्रा into ये मात्रा. Yes, no children? And बड़ी ई मात्रा into छोटी ई मात्रा, and add या आ मात्रा and चंद्र बिंदु. Okay, don't confuse children. Practice well. Okay, write with neat handwriting. Thank you.